So you can start. Yeah, thank you. Yeah. So good evening to all of you. In the previous class, we discussed two definitions, definition 1 and definition 2, right? Yeah, so we proved that two definitions are equivalent for the least upper bound property, right? And then afterwards, we defined one property called LEV property. What is LEV property says, you know, right? LEV property says that every non-empty subset which is bounded above has a least upper bound, right? So this is what we studied. It is called LEV property. Yeah. So every non-empty bounded above subset in R has a least upper bound in R. Yeah. So how we state it in a by using quantifiers, every subset non-empty bounded above, then there is an alpha belong to R such that alpha is the least upper bound for A in R. Yeah. Okay. So then by using this, we proved that least upper bound is unique. I hope you gone through the proof again one more time, right? Then we have some examples of LB. Then we stated AP1. Set of all natural numbers is not bounded above in R, right? So I hope you've gone through the proof, right? One of you can tell the proof. Set of natural numbers is not bounded above in R. Yeah. Ashish, yeah, go ahead. Ashish. So how do you prove that the set of natural numbers is not bounded above in R? सर हम काउंटर पॉजिटिव लेंगे. Positive, yeah, by proving by contradiction. Okay, how do you start? Tell us. Suppose n is Sir, set of natural numbers is an subset of real numbers, and it is non-empty. Sir, और हम ये मान के चलेंगे कि let set is bounded above. Okay, right. So then by using the LUV property, so we have upper bound. Yeah, okay. Yeah. Okay. That So let alpha is least upper bound of natural. Yeah. Yeah, right. Next afterwards. So then alpha minus 1 is less than alpha. So then if alpha minus 1 if I less than alpha, right? Then what happens? So then by using definition to least alpha minus 1 is not an upper bound for natural numbers, right? Yeah. So then there is an such that n is greater than alpha minus 1. So n is greater than alpha minus 1 plus n plus 1 is greater than alpha. So that is a contradiction for alpha is an upper bound, right? Yeah. Good. Nice. Then somebody tell me what is AP2? Aryan can tell us what is AP2? Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. So we take an x element which is greater than 0. Can I say it in quantifiers? No. So tell us what it's fine. X is greater than 0, real number. Okay. Yes, and y is any real number. Right. Then natural number. Then we got a natural number such that we multiply it by x, then it exceeds our y. So that is nx is greater than y. Okay. So yeah, by quantifiers, how do you say? Yeah. That given any x greater than 0, right, y is any real number, then there exists n natural number. Right. So nx is greater such that nx is greater. That is AP2. Yeah. Okay, so now today we'll start now. So today we try to prove that AP2, right? So AP2. Okay.
So what is AP2 says, now I'm writing, for every x comma y belongs to, I'm taking like this, R plus direct product R, right? Yeah, what happened, there exists a natural number n belongs to n such that nx is greater than y. So this is the AP2, right? How to prove this one? Okay, our goal is to show this one. This is the proof, right? So instead of every x belong to R plus and y belong to R, I took ordered pair directly. So somebody can give me how to prove this one? Any idea? Yes, go ahead. Any idea, Jyoti? You want to say something? Sir, by contradiction. By contradiction. Okay, by contradiction. Yeah, what is that we'll assume by contradiction means? You have to negate the given statement. What is the negation of this statement? There exists x comma y belongs 1 to minute. R positive. No, go slow. Yeah, there exists x naught comma y naught. Means there exists, you told, na? I'm fixing one, right? Are okay? Yeah, there exists some y naught comma x naught comma y naught belongs to this. Okay, tell me. Does that given any n belongs to natural Yeah, very number, good, nice. such that nx Wonderful. less Good, than nice. equal to So y. correctly, you negated very nicely. So by we are proving by contradiction. Okay. So we have negated the given statement. For every this happens means there exists x naught y naught. Says that nx is so here I have to write nx naught and y and y naught. Yeah. So there exists n such that nx naught is less than or equal to y naught. So okay. Now what is that I am having now? So nx naught for every n belongs to natural numbers. I have that nx naught is less than or equal to y naught. Okay. Now can somebody point out now what next? Not Jyoti, somebody. What I can do from here now onwards? Any clue? Sahil? Yeah, Sahil, go ahead. सर इससे आगे हम 1/x0 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, Yeah. जिससे हमें n की वैल्यू Very मिल good, जाएगी. Sahil. So you are saying that I can multiply both sides with 1 by x naught. So I'll get now Yes. with this, is it equality will not be changed? सर और हमने आर्किमेडियन प्रॉपर्टी 1 से पढ़ा कि nx जो बाउंडेड अबव नहीं वो है. बाद में साहिल अभी सर का क्वेश्चन है. so actually you are सर telling का that क्वेश्चन है कि इनइक्वालिटी चेंज होगी. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. okay आपको भी ऐसा हुआ था. Okay, when I multiply both sides with 1 by x naught, inequality is not Yes, sir. inequality will not change. सर नहीं होगी चेंज, क्योंकि सर x0 जो वो पॉजिटिव है, इससे 1/x0 पॉजिटिव होगा. Okay, so x naught 1 by x naught is also defined. Yeah, so we have this. उसके बाद आप क्या बता रहे हैं? n is less than or equal to y naught for any given n. What happens then? This implies what? Sahil. n जो है इससे हमें ये लग रहा है पता कि n जो वो बाउंडेड है. Okay, that means that for every n belongs to n, for given any n in n is Yes, sir. equal to x naught y naught. So उसका मतलब है n is bounded above. N is सर by not upon x0. bounded above by x naught y naught upon x naught. Okay, but which is a contradiction? Which is a contradiction for what? Which is a contradiction for Archimedean property. that is AP1. Very good, nice, wonderful. Yeah, AP. yeah, good. So this आपने इधर n सर आपने इधर n greater than x0 upon y naught लिखा है. n is less than or equal to y naught. No, कुछ नहीं लिखा है. x naught. Okay, y naught by x naught लिखना है. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, I made a mistake.
y naught by x naught. Right. Thank you, Sahil. Yeah, you can mute. Yeah, good. So now by using AP1, we proved AP2. Okay. By using AP1, we proved AP2. AP2 is proved, but we proved by AP1, right? So AP1 implies AP2 we done, right? How we proved? So AP2 means what? Given any positive real number, any real number y, there is an answer that nx is greater than y, we need to prove. So Jyoti told that we'll prove by contradiction. So that means there is x naught and y naught. X naught is positive, y naught is a real number. For any given natural number n, nx naught is less than equal to y naught. So that is a negation of the given statement, right? Then Sahil told that divide both sides by x naught, then n is less than or equal to y naught by x naught. That is for any n, it is true. That means that the natural numbers is bounded above. That is a contradiction from AP1. So by using AP1, we proved AP2. Now somebody can help me. Is it possible to prove AP1 from AP2? What is the meaning of this? So if you prove this one also, then what is that we are proving is that AP1 if and only if AP2, right? AP1 if and only if AP2, right? But so I already done one side. AP1 implies AP2. Now how to prove AP2 implies AP1? What is AP1? We are assuming AP2. We have to prove AP1, right? We are assuming AP2. What is AP2? Any given real positive real number and y is any real number and x is greater than y. But what is AP1? Set of natural numbers is not bounded above in n. That we need to prove. Yeah. So let us start. How do you start? So let me write one more time. We are trying to prove AP2 implies AP1. So we are assuming AP1, AP2. Yeah. So I want to show that natural numbers is not bounded above in R. Yeah. How do somebody can help me? How to prove this? Any one of you? What is that I have to show? So AP1 means what? N is not bounded above. I had to show. Not bounded above means what? Means what? N has no upper bound, right? What is that meaning? Can somebody tell me that not bounded above meaning is what? Yeah. Aryan? Asha, Asha, okay. Asha Devi. What do you mean by N is not bounded above? सर इसका मतलब कि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है अपर बाउंड नहीं है, उसका मतलब क्या है? हम सर सर जैसे हमने कोई भी नंबर लिया तो हमें उससे ग्रेटर नंबर एक मिलेगा. वेरी नाइस, ओके. कहाँ से लेना है? गिवन एनी नेचुरल नंबर. ये नॉट बाउंडेड अबव. यू टोल्ड कोई भी नंबर लेते तो उसमें से एक जो बड़ा नेचुरल नंबर भी मिलेगा, लेकिन पहले नंबर कहाँ से ले लेंगे? गिवन एनी नंबर, वो नंबर कहाँ से ले लेंगे? सर रियल नंबर. या गिवन एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर, so there exists an n belongs to n such that n is greater than alpha. ये दिखाना है. Wonderful. This is what we need to show. Not bounded above means whatever the real number you give me, उसमें ज्यादा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा. ये इसी हमने ऐसा क्वांटिफायर से लिखा था, लेकिन ये प्रूव करना है. उसकी फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? सो पहले हम लेंगे अल्फा बिलोंग्स टू आर. या नाउ अभी प्रूव करना है n is, we have to find an n greater than alpha. How do you find? But हम अभी AP2 यूज कर सकते हैं. Yeah, somebody can come up and tell me how can I prove n is greater than alpha? AP2 में क्या है? AP2 क्या दिया है हमको? पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, एक x, y is any real number, nx is greater than y. वो हम कैसे यूज करेंगे? Show n is greater than alpha. Yeah. Anyone ready to say that?
Yeah, if you are ready, then please raise your hand. कैसे AP1 यूज कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए, n greater than alpha प्रूव करने के लिए? Sunil sir, now it is fine. Voice is okay? Yes, sir. Rohit. Yes, Rohit, you can unmute. Rohit, we have to use AP2. सर लास्ट क्लास हाँ. सर सॉरी लास्ट क्लास लगी नहीं थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर इसमें समझ में। Okay, ठीक है रोहित. Yeah. So you, sir. yeah, Aryan, can you say now? Do you have any idea Yes, sir. how to proceed? Using the statement of AP2, we can find an alpha. How do you Yes, sir. get? हाँ, no, find an alpha नहीं, already alpha दे दिया है. हमने n Yes, sir. natural number yes, find करना है, greater than alphas. using the statement like given any xy in order pair R positive comma R, Yeah, that is then clear. there exists. वो सब कुछ ठीक है, अभी वो यूज करना है, AP2 हम यूज करना है. Yes, कैसे करेंगे? सो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हमने अल्फा दे दिया है, अल्फा एक रियल नंबर दिया है. अभी आप क्या करना है? आपको n फाइंड आउट करना है, वो अल्फा से ज्यादा है. Yes, sir. Like we can write nx is greater than y, then n must be greater than yx. Okay, that is all. Then we can write alpha. But I need alpha. For this alpha, I have to find. For example, if I take 3.5, can you tell me natural number greater than 3.5? Yes, sir. 4. Yeah. So like that, if I give you minus 17.7, then can you give me a real number, natural number greater than this real number? A alpha, Yes, sir. 1. right? ऐसा अल्फा देते तो आप नेचुरल नंबर बता रहे हैं, लेकिन हर अल्फा के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट है, वो प्रूव करना है हमें. उसके लिए आप APT यूज कर सकते हैं, राइट? सो हाउ डू यू यूज इट? या दैट इज द क्वेश्चन. सो समवेयर आई नीड टू यूज x and y, and one of them I had to take. Yes. कुछ करना है वो AP2 यूज करने के लिए. हम AP2 यूज करना है. AP2 यूज कैसे यूज करेंगे? AP2 में x and y, two real number are given, then immediately it says that there is a natural number and says that nx is greater than y. अभी n greater than alpha दिखाना है. So in order to show n greater than alpha, what is that x and y I choose, so that n greater than alpha हो सकता है. Okay, no problem. So Jyoti, do you have any idea? Okay. No, sir. Okay, no problem. Sahil? y को हम 10x ले लें और y is equal तब to जैसे 10x, तो अगर हमें n को 10 बताना हो तो नहीं, हम दिखाना है n is greater than alpha दिखाना है, right? So Archimedean property 2, AP2 क्या बता रहा है? nx is greater than y बता रहा है. तो ये कैसे यूज करेंगे? मैं x को 1 ले तो हाँ, x को 1 ले. x को 1 ले, ओके, x को 1 लिया. y को क्या ले? yes sir, और y को अल्फा, y को अल्फा ले. y को अल्फा या लेना, गुड, हो गया ना. y Yes, is sir. equal to alpha, x equal to 1, x is positive, 1 is greater than 0, y is the real number. So now there exists an n such that n into 1 is greater than alpha, right? So for this alpha I found n, right? So n is greater than alpha, n, right? So AP1 AP2 यूज करके AP1 बहुत आसानी है. टेक y equal to alpha, x equal to 1 ये हो चुका है. So for alpha के लिए there is an n. So that direct proof, yeah. So is it all of you are clear? If you are clear, can you raise your hand please now? The proof AP2 implies AP1. Sir, how many raised hand? Sir, 21. 21. Okay, 21 raised hand. Yeah, 23, sir. Oh, good. Okay. So yeah, I just repeat now. You can lower your hand. So AP2 implies AP1. Okay. What is AP2 says?
so that you know. So AP1 क्या दिखाना है? Natural numbers is not bounded above. उसका मतलब क्या है? आशा बोला ना, so given any real number alpha, there is a natural number n such that n is greater than alpha दिखाना है. हमने कैसे शुरू किया? वो ये सब कुछ हमारा माइंड पे, लेकिन दिखाने के समय कैसे शुरू करना है? एक रियल नंबर लेना है. Let alpha belongs to R. Now I want to find a natural number greater than alpha. So what is Sahil told? Now I take my y is equal to alpha and x equal to 1. Then n into 1 is greater than alpha. So n is greater than alpha. So I found a natural number which is greater than alpha. Done, right? So both are equivalent. So now AP1 if and only if AP2. So you have to go through this, okay? AP1 if and only if AP2. So I'm calling this as discussion 1, D1. So discussion 1, okay? Notes आपको मिलेगा बाद में. So एक बार वो check करना है आप लोग, okay? Before coming to next class and today also, okay? Now I'm going to another question, right? Some people, okay, let us first state it. Suppose I gave you x is equal to 0.3. X equal to 0.3. So can you find a natural number such that 1 by n is less than x 0.3? एक n मिल जाएगा ऐसा? x 0.3, x is positive. एक नेचुरल नंबर मिल सकता है 1 by n is less than 0.3. Can you give me one natural number? Yeah, Asha? सर 1. 1 n equal to 1 ले सकते हैं. 1 by 1 is 1. 1 is less than 0.3. 1 सर is less less than. okay sir. Yeah, okay, no problem. सर 1.4. 4 1 by 4 कितना है? 0.25. 0.25 is less than 0.3. correct. वही आप इतना सोच रहे हैं. मैं 1 lakh ले सकता हूँ. n 1 lakh is a natural number. 1 lakh है ना? Yeah, 1 by 1 lakh is less than 0.3. I am asking, give me one natural number. Yeah, 4 is also correct. Good, nice. 4 is also correct. 1 by 4 is less than 0.3. Okay, now somebody can give me one small positive real number. Rohit, can you give me one positive real number? बहुत छोटा वाला. आपने लास्ट क्लास नहीं आया पता है, फिर भी आप ये तो बता सकते हैं. आप एक छोटा नंबर दीजिए, positive real number. सर 0.1. 0.0001. 0.001. Very good. Thank you very much. Okay, रोहित आप ही बता सकते हो. एक नेचुरल नंबर बताना है आप. ओके, सच में 1 by n is less than x होना चाहिए. आपका नंबर से छोटा है. आप n बताना है. n की वैल्यू सर 1 lakh. 1 lakh आप ले सकते हैं. करेक्ट, राइट? यस. या सो अभी इससे हम क्या पता चल रहे हैं? कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लेते तो so whatever will be the smaller it is, right? Yeah. Okay, so can you somebody tell me, if I take x equal to 2 now, right? Can you find a natural number and such that 1 by n is less than 2? That is easy, right? Any natural number will work for this, right? Yeah. Okay, so somebody, can you make an observation and say the statement from these examples? If you are able to say, can you raise your hand, please? So यहाँ से एक नेचुरल नंबर मिला, 0.001 एक नेचुरल नंबर मिला, 2 है तो भी एक नेचुरल नंबर मिला. सो इसको सारी मिलाकर कुछ बता सकते हैं? Yeah, Ashish, you can go ahead. Given any x belongs to R positive. Given x belongs to R plus, okay.
such that y belongs to R. y का जरूरत क्या है? मैं y कहाँ पूछा था? मैंने पास्ट रियल नंबर लिया, then I'm telling there is an n such that 1 by n is less than x बता रहा हूँ। केवल दो ही नंबर है, पॉजिटिव नंबर लेते तो एक नेचुरल नंबर मिल सकता है, 1 by n is less than x, राइट? Yes, sir. अब थोड़ा मॉडिफाई करके बता सकते हैं। यस, x is positive, then कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते तो क्या हो रहे हैं? 1 by n, there exists there exists natural number n such that natural number such that 1 by n is less than very x. good, right? So इन्हीं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, right? If already positive number is greater than 1, I can take n equal to 1. If it is even, it is less than 1 also, not a problem. I can find a natural number. So yeah, so this is also, you nicely pointed out, you people, from the example. So this is called AP3. Okay, so it is also an Archimedean property. So now if somebody asks you what is an Archimedean property, आप किसी भी बता सकते हो. Of course you can prove that these are also equivalent. The AP3 is equivalent to AP1, AP3 is equivalent to AP2, and like that. Okay, लेकिन AP1 क्या बताता है? AP1 बताता है set of all natural numbers is not bounded above. AP2 क्या बताता है? Take any positive real number and y is any real number, there is a rational number n such that nx is greater than y. AP3 क्या बता रहे हैं? केवल दो ही वेरिएबल्स हैं, एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है. सो 1 by n इज लेस देन x. बट लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगे? आप AP1 और AP2 यूज कर सकते हो. So I want to two proofs. One of you prove by AP2 and one of you prove by AP1. Let us see. आप प्रूव कर सकते नहीं? देखते हैं, सोच लो. ये प्रूव करना है, आप AP1 यूज करके प्रूव कर सकते हो, AP2 भी यूज करके प्रूव सकते हो. मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट एक प्रूफ आएगा आपसे. Yes, somebody? Is anyone ready? Is the question clear? किसी ना किसी एक AP1 और AP2 से यूज करके प्रूव कर लो. Yeah. Is there any person ready, sir? Sunil sir? Sahil. Yeah, Sahil, go ahead. Yes sir. सर मैं AP2 से कर सकता हूँ इसको. सर AP2 से, very good. अगर हम इसको So अभी सर क्या दिया है? इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करें, एक मिनट मैं लेट अस बिलोंग टू R प्लस लिया है. ओके, नाउ आपका ड्यूटी क्या है, क्लाइम क्या है, क्या प्रूव करना है? देयर एग्जिस्ट एन n. देयर एग्जिस्ट n such that ये प्रूव करना है. क्लाइम मतलब क्या है? प्रूव करना. क्या Yes, दिया sir. है? पॉजिटिव रियल नंबर. Prove करना है. पॉजिटिव रियल नंबर दिया. कैसे करेंगे? सर इसको पहले हम नेचुरल n स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को. बोथ साइड नहीं है, ये प्रूव करना है. हमको कुछ नहीं दिया है. x इज पॉजिटिव रियल नंबर. Yes. आप अभी एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है. 1 by n इज लेस देन x. सर बाई जो होगा वो हमें x इक्वल टू बाई मान लेंगे ना. और x को ओके, हमें nx या y इज इक्वल टू x ले रहे हैं. ठीक है, समझ गया. सो या बट व्हाट इज y यू? और सर बाई जो जैसे हमें प्रूव करना है nx आर्किमेडियन प्रॉपर्टी 2 nx इज ग्रेटर देन बाई, तो बाई हमने x ले लिया. Okay. और x जो होगा वो 1 by n स्क्वायर ले लेंगे. 1 by n स्क्वायर ले लेंगे. नो, ऐसा नहीं. वो पॉजिटिव ही आएगा. नहीं, आपको n पता नहीं ना. आपको n पता नहीं है, वो कैसे लेंगे आप? See, what is given to us is that y is x, only x is given, x is positive. See, I asked those questions, right? So when I told you 0.3, so one person told that I take n equal to 4. 1 by 4 is less than 0.3. 0.001, then I can take n equal to some 1 lakh. Then 1 by n is less than that. So ऐसा अभी हमको x पता नहीं था.
फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ आई चूज n? सर 1 anyone बाय else? n स्क्वायर पॉजिटिव ही नहीं आएगा. No, 1 by n. What is 1 by n? I know. I do not know n. वो x में डिपेंड है ना. See, x is positive. 0.03 तो I can take n equal to 4, right? I cannot take n equal to 1. My x equal to 2 है तो मैं n equal to 1 भी ले सकता हूँ. So ये n value depend upon the x, है ना? So आप अगर AP2 से प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, AP2 से कैसे प्रूव करेंगे? 1 by n is less than x. Okay. Anyone? Any other person? Ayush. सर Yeah. Ayush. Yeah, please. Yes, Preeti. सर AP2 से हम जानते हैं कि अगर कोई x जो है हम रियल पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं हाँ. तो nx जो होगा वो y से ग्रेटर देन होगा. हाँ, y क्या लेंगे आप? ओके, आपके सर पास. इस कंडीशन में अगर y हम 1 ले ले और दोनों साइड्स को n से डिवाइड कर दी तो. Okay, good. Wait. What you are saying that my x is equal to x only, this number already passed, so x is given already. So you are taking y value as 1. Okay, good, nice. Wait. Yeah, nice. You are giving some idea. So you are taking y is equal to 1 and x is already passed to दिया है. So now what is the AP to say that Yes, there sir. exists natural number n such that nx is greater than 1. Very good. Y is 1 here. Okay, good, nice. Nice. Preeti, right? Yeah, Preeti, Yes, sir. wonderful. उसके बाद क्या करना है? मैं दिखाना है 1 by n is less than x. वो तो नहीं आया है मुझको. सर इसको n से डिवाइड कर दे बोथ साइड को. डिवाइड मतलब 1 by n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, right? So यस सर. n is a natural number, so n is positive. 1 by n is also positive. Yeah, you are correct. 1 by n से मल्टीप्लाई करते तो x is greater than 1 by n. Since positive, so equality will not change. Yeah, wonderful. Good, nice. So proof is over. Very simple, right? Taking y equal to 1 is the idea. Already x is positive. y 1 लेते तो there is an n says that nx is greater than 1. So हो गया proof. Is it okay, Sahil? Sir. Sahil, is it clear now to you? Yes, sir. Is it clear? Very good, nice. Yes, sir. So somebody can prove by AP1. AP1 से कैसे प्रूव करेंगे ये वाला? Anyone ready? AP1 बता रहे Yes, हैं. RN. AP1 बताता है numbers are not bounded above. वो यूज करके कैसे दिखाएंगे? Yes. Ayush. Yes, sir. Can I speak, sir? Yeah, speak, please. Yes, sir. So we have given that n is not bounded above in R. Okay. Then so we have to take x in R positive Okay. to show that its multiplicative inverse exists. Yeah, so already we take x belong to R plus. Yeah. Okay, I Yes. will ask. Then Yeah, please go ahead, Ashish. Yeah. since n is not bounded above in R, then we can write that there exists n in n such that n is greater than x. yes. That we can say, yes. Any given real number, n is greater than x. But I want 1 by n is Yes. less than x, right? Yes, sir. N is greater than x, then since x is non-zero, then its multiplicative inverse exists, and then n becomes greater than 1 by x. But I want to show that x is greater than 1 by n, na? Not 1 by x is greater than 1 by n. Good. But idea is good, wonderful. But लेकिन अभी आपने मैंने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन आपकी आर्गुमेंट से क्या आ रहे हैं? 1 by n is less than 1 by x आ रहे हैं. ओके, हम Yes, कुछ sir. करेंगे, कुछ छोटा सा करेंगे. आप बता दीजिए. आप अनम्यूट है, कम यू आर जस्ट अनम्यूट ओनली. मैं आपको पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन. x बिलोंग टू R प्लस. व्हाट अबाउट 1 by x? ये कहाँ मिले? Yes, sir. It also belongs to R plus. R plus. Now n is not bounded above. N is not bounded above. Yes, Okay. sir. And Then n becomes greater not than 1 by x. bounded above.
in R. Okay. So इसकी वजह से क्या होगा? 1/x is a real number. Yes, sir. Then n becomes there exists n in n which becomes greater than 1/x. Greater than 1/x. अब इसके बाद क्या होगा? You reverse it to then 1/n is less than Yes, sir. x. Good. Yes. Nice. Actually यहाँ पॉजिटिव का जरूरत है क्या? नेगेटिव है तो क्या है? इसका कोई दिक्कत नहीं है, राइट? x नॉट इक्वल टू 0 होते तो चलेगा. If x is Yes, also one non-zero, X 1 must by be x is one. defined. So even then it works. Okay, but anyhow, so we need to concentrate here only. Yeah, x is positive, then 1 by x is defined. That is also positive. Now 1 by x is a real number. So natural numbers is not bounded above in R. उसका मतलब है there is a natural number n says that n is greater than 1 by x. So 1 by n is less than x. So I'll ask one of you. So Priyanka, so tell me which one is easy? आपको which one is आसानी लग रहा है प्रियंका? ये वाला और ये वाला? आपने ये प्रूफ दिया है. So am I audible, Priyanka? Yes, sir. Okay, no problem. So Asha, is it clear? Both of them are clear? Okay, good. Yes, sir. Okay, so बहुत आसानी है. x real positive तो 1 by x is positive and n is not bounded above. There is an n such that n is greater than 1 by x. 1 by n is less than x. So AP2 से AP1 से प्रूव किया दोनों. So हम अभी ये AP3 implies AP1 वो भी आप प्रूव कर सकते हैं. So take this as an exercise, right? ये एक्सरसाइज लेके अब कर सकते हैं. AP3 implies AP1 कर लो, right? AP3 implies AP2 भी कर लो. ओके, टाइम मिलते तो आपके पास. सो आपने AP1 से AP3 प्रूव किया, AP2 से AP3 प्रूव किया, लेकिन ये भी कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि AP1 if and only if, AP2 if and only if, AP3 सारी की सारी तीन ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है. गुड. किसी भी आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बता सकते हैं. So if somebody asks you, you can give any one of them. Yeah. Okay. So is it clear till now? Everything is fine? So can you raise your hand till now? Everything fine? आगे बढ़ेंगे. Sir, how many? Yeah, is it everything fine? Okay, Around good. 25, Nice. sir. Okay. Yeah. Okay. Nice. Okay, you can raise your hand now. So now I will ask you, since you told you are all understood, so I will test you, right? I have to test. So आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ. ओके, सो टेस्ट है ये वाला. n is equal to 1. ओके, take a white paper and a pen. Okay, you can draw this. Okay, so you know 0,1 open interval, right? ये कैसे होता है? यहाँ 0 मानते हैं, यहाँ 1 है, right? Open both the sides 0 and 1. Now I take n is equal to 2. Now I take 0,1 by 2. Okay, so 1 by 2 यहाँ होगा, right? Okay, I hope no problems. Now I take n is equal to 3. Then I take 0,1 by 3. So ये तो यहाँ कुछ यहाँ जगह पे होगा. So can somebody tell me 0,1 by n? Okay, ये इंटरवल्स में क्या हो रहे हैं? n equal to 1, 2, 3 ऐसा लेते तो ये इंटरवल्स में क्या हो रहे हैं? लेट अस कॉल इट jn. Okay, jn ये बोलते हैं, इसको jn बोलते हैं, एक इंटरवल. Can you tell me the connection between J1, J2? J1, J2 में connection बता सकते हो? Yeah, Aryan? Yes, sir. J1 is the J2 is the subset of J1. Wait, proper subset, right? Yeah. So Rohit, what is the connection between J2 and J3? Rohit? J2 is 0,1 by 2. J3 is 0,1 by 3. Correct?
यस सर। इन दोनों का कनेक्शन बता सकते हैं, प्रीवियस क्लास का कोई जरूरत नहीं इसमें। यस सर। J2 See 0, 1 by 2 subset. here, 0, 1 by 3 is here, right? Yes sir. So ये J3 है, यहाँ से यहाँ तक J2 है। So J2 Sir J3 is a subset of J2. या so ये सारा खत्म कम होती जाएगा ना, 1/100 आएगा एक J100, राइट? ये बहुत छोटा होगा, 1/100 बहुत जीरो के बहुत नजदीक होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इंटरवल्स। ओके, अभी आपका क्वेश्चन है, यू आर टेलिंग दैट यू आर अंडरस्टूड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज दिस इंटरसेक्शन ऑफ Jn, या सो n इज इक्वल टू 1 to infinity, वो लिखने के लिए जरूरत नहीं। सो आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस 0, 1/n, इसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होगा, वही है क्वेश्चन। या सो व्हाट इज योर आंसर? आप पहले आप सोच, यू कैन व्हाट एवर इट यू आर फीलिंग यू कैन टेल अस, बाद में हम प्रूव कर सकते हैं, डरना मत। आपको क्या लग रहा है, ऐसा ऐसा इंटरसेक्शन करते तो आपको पता है J1 इंटरसेक्शन J2 क्या हो सकता है, इट इज J2 ओनली। J1 इंटरसेक्शन J2 इंटरसेक्शन J3 क्या है, J3 है। सो ऐसा ऐसा इंटरसेक्शन करके जाते तो क्या होगा, लास्ट में क्या बचेगा? यस सर, सो कैन यू कॉल समबडी सर? आयुष। आयुष, आप क्या सोचते हैं ये क्या हो सकता है? JN sir, JN is going to be sir intersection No, of all. I'm changing n also. N is equal to n भी change हो रहा है, n equal to 1, n equal to 2. Okay, इसका मतलब है 0, 1 इंटरसेक्शन 0, 1/2 इंटरसेक्शन, ऐसा ऐसा जा रहा है। मैं स्टॉप नहीं कर रहा, आप ठीक बता रहे हैं। आई एम डूइंग अप टू 100, इट इज 0, 1/100, वो तो समझ गया, लेकिन ये n भी चेंज होता जा रहा है। इज इट ओके नाउ? क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है कम से कम? Yes. 0, 1, Yes sir. Yes. 0, 1/2 इंटरसेक्शन 0, 1/3 इंटरसेक्शन, ऐसा लेकर जाओ, ये स्टॉप नहीं कर। या somebody else, someone now? Okay, अभी आप बता सकते हैं आयुष, आप क्या सोच रहे हैं, ये क्या हो सकता है? ओके, नो प्रॉब्लम। somebody else? साहिल। सर 1/n, जो अगर n इंफिनिटी बन जाए तो 1/∞ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 बन जाएगा। ऐसा नहीं बता सकते सी, ये आप देख रहे हैं ये ग्राफ में क्या हो रहा है, राइट? ये नजदीक नजदीक 0 के नजदीक जाएंगे ना, ऐसा ऐसा, राइट? यस सर, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अप्रोच करेंगे, लेकिन फाइनली क्या कोई एलिमेंट होगा इस पे? ये सेट है नो, उसके मतलब आप क्या बता सर होगा नहीं। उसका मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ये इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। सर ओके, नो प्रॉब्लम साहिल। हाँ, सो ज्योति, कैन यू से समथिंग? सर एम्प्टी, सर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई एलिमेंट होगा। ओके, सो वी नीड टू शो इट इज एम्प्टी सेट। ओके, so how do you prove it? That is important. Okay, so first of all try to understand that x belong to intersection Jn, उसका मतलब क्या है? x belong to Jn for every n, that means given any n belongs to n, x belong to Jn, that means x belong to J1, x belong to J2, x belong to J3. Yeah, means J3 means 0, 1/3, x belong to J100, x belong to J1/1000, 0, 1/1000, like that, हर जगह पे होगा। सो बट यहाँ से कुछ बता सकते हैं आप, ये नहीं होगा, आप दिखाना है, एम्प्टी दिखाना है। वी आर प्रूविंग ए कॉन्ट्रडिक्शन। सपोज एक एलिमेंट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो x इज इन इंटरसेक्शन Jn, सो पहले कुछ बता सकते हैं इसके बारे पे? वॉट एवर यू वांट टू टेल, यू कैन टेल। इसका मतलब क्या है?
इट इज इन इंटरसेक्शन JN मतलब क्या है? x बिलोंग टू J1 मतलब क्या है वो बता सकते हो? x बिलोंग टू J1 मतलब क्या है? x बिलोंग टू J1 implies 0 is less than x is less than 1 है ना? दिस इज ओपन इंटरवल 0, 1. x बिलोंग टू J100 इसका मतलब कोई बता सकते हैं? Yeah, anyone of you? X is less than 100. X is less than 100 or no? आप कुछ गलत बता रहे हैं. X is 1 by less than 100. 1 by 1 by 100. 100, राइट? सो उसका मतलब ये है. सो ये यहाँ से आप क्या क्या बता सकते हैं? Now in general ये सारी की सारी पे है. सो कैन यू कंक्लूड समथिंग? यहाँ से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? x के बारे में कुछ बता दीजिएगा. ओके, कैन x be positive now? X is in open interval 0, 1, x is in open interval 0, 2, x 1 0, 1 by 2, x is in open interval 0, 1 by 3. इससे आप बता सकते हैं कि x greater than 0? Yes, right? This is there. What is other side is telling? Here it is fixed. One side it is fixed, 0 is fixed. लेकिन other side क्या है? X is less than 1 by n. But this is true for every n, right? ये गलत है नहीं? आप एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या बता दिया? AP3 क्या बता रहे हैं? ये पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 upon n is sir 1 upon n is less than there is an a m, positive number. such that 1 upon n is less than x, right? That means that so there is an m, so there is m ground, there is an m belongs to n such that n x is positive. AP3 क्या बता रहे हैं? AP3 बता रहे हैं x is greater than 0. There is an m belongs to n such that 1 by m is less than x. So now x JM पे होगा नहीं होगा? x JM पे होगा नहीं होगा? JM क्या है? 0, 1 by m. But 1 by m is greater than less than x, right? So 0 and 1 by m, right? So x बाहर है, so it is not there. So it is not in one of the sets. So then how it can be in intersection? So ये गलत है. Okay. So that means that you have not understood the Archimedean property fully. Hope you discuss this. Okay. This is discussion 2. Okay. Are you clear? So what is the statement? I'll make a statement and you try this. Okay. Discussion 2 है as our week पे 0, 1 by n. Okay. उसका intersection है empty set. You have to prove that. Yeah. ये AP3 से आ रहे हैं आसानी से. Yeah. Otherwise AP1 all are equivalent, so you can prove. Is it okay? Clear? आप डिस्कस करेंगे ना ये बात? Okay. Okay. Just now nothing is done. We done that AP1 implies AP2, AP2 implies AP1. उसके बाद हमने AP. Okay. I'll change it little bit. Okay. ये discussion 3 बताता हूँ. This is discussion 3. Discussion 2 इनको बताता हूँ. AP2 implies. Yeah. This one I'll call it as discussion 2. But discussion 2, if you want, you can postpone. You can do in the week 10 पे. आज नहीं हो पाते तो बाद में कर लो. लेकिन मैं discussion 3 बता. Okay, good. Now get back to here, right? So ये भी आप exercise दे रहा हूँ, एक exercise आपके लिए. So what you can say about minus n, n? N is equal to 1 to infinity. So look at the real line. N equal to 1, closed interval, minus 1 to 1. N is equal to 2, minus 2 to 2. ऐसा आप यूनियन कर रहे हैं. अभी यूनियन इसका ये क्या हो सकता है? ओके. कोई इज एनीवन वांट टू स्टेट समथिंग व्हाट इट कैन बी? प्रूफ बाद में. आपको क्या लग रहा है वो बता सकते हैं आप.
So set of all integers. इंटीजर्स नहीं है, ये ओपन सेट, एक ये इंटरवल्स है, इंटरवल्स रियल नंबर्स पे है। ये -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। ऑलरेडी -1, -2 है। ओके, या सो या एनीवन एल्स? Set of real numbers. Yeah, you can speak, no problem. Yeah, set of real numbers. We need to prove this. ये ऐसा प्रूव करने के लिए ये सेट्स हैं, ये भी सेट है। यू हैव टू शो दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। लेकिन एक आसानी है। सो -1, 1 is subset of R or not? Yes, right. -2, 2 subset of R. So all these are subsets of R for any given n. The union is also subset of R. लेकिन आपको रिटर्न प्रूव करना है। If x belong to R, you have to show that x is in one of the sets. आप ये प्रूव कर सकते तो हो जाए। आप क्या प्रूव करना है? अल्फा बिलोंग्स टू आर ले लो, देन यू हैव टू शो दैट अल्फा इज इन वन ऑफ द इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू, देन यू विल टेल इजीली, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अल्फा इक्वल टू 3.2, कैन यू टेल मी वेयर इट विल बी? somebody can tell me अल्फा इज इन अल्फा इक्वल टू 3.2, कोई बता सकते हैं? ये जेन, अभी ये जेन हो गया, राइट? किसमें है? J1 पे है 3.2। J1 is -1 to 1 closed interval। किस पे है साहिल? -4 से 4। -4 to 4 J4 पे है ना? राइट, यस सर। J4 पे है, J5 भी है, J6 में भी होता है। या सो 4 से सारे की सारे में होगा, बट J1 पे नहीं है, J2 पे नहीं है, -2 के 2 के बीच में ये नहीं है, -3 के 3 के बीच में भी नहीं है, राइट? बट इट विल बी इन -4 to 4, -5 to 5 and so on. So like that, if I give alpha, you will tell me that where it is, but हर alpha के दिखाना है। So I take some beta arbitrarily, then you need to find n such that beta belong to Jn. Okay, is the question clear? Is the question clear? Okay, try कर लो। So it is an exercise. So week पे ये we can call it as D4 or whatever. But today you discuss D1 and D3. D2 and D4, if time permits, you discuss today. Otherwise, postpone. In the weekend पे कर लो। I'm giving, before coming to the next class, try to prove these things. Yeah. So, but by the way, it is correct. Equal to R is correct. Okay. Thanks. Okay. So, Sunil sir. Yes, sir. I will again show video and try again. Okay. Yeah, let us see. Video से करता हूँ एक बार और एक बार. Yeah. Yeah. Okay. Good. So you tell me, sir, if it is not audible, then I will switch off video again. Okay. Good. Still Yeah. it's fine, Okay. sir. Yeah. Okay. All of you now check this. Now I am asking questions. Be ready. Okay. Ask you. Are you ready? Take a deep breath and ready. Okay. Good. So look at be concentrate. So this is a test to you that how you are following till now. Okay. So I'm taking one beta real number. That beta belongs to R. Okay. I take a beta in R. Okay. One real number. Okay. Now I'm constructing a set. I'm constructing S beta. एक real number लिया, उससे एक set बना रहा हूँ. So I'm taking small z belongs to capital Z. Okay. I'm collecting integers such that some condition, right? वो condition मैं भी लिखता हूँ. ये condition beta में depend है. इसकी वजह से मैंने S beta लिखा था. Okay. But before telling, can somebody tell me S beta is subset of what? Question number 1. ये बिना देख के आप बता सकते हैं. कंडीशन बिना बता सकते हैं. रियल नंबर तो ठीक है, बट लेकिन बहुत रियल नंबर तो ठीक है, और कुछ बता सकते हैं बहुत अच्छे से. या इंटीजर्स करेक्टिंग इंटीजर्स ना. z belong to z लिखा है, पहले इंटीजर्स ही ले रहा हूँ.
Okay, first of all, it is subset of Z, but now I'm taking that Z is less than or equal to beta. Which integers ले रहा हूँ? Those integers which are less than beta. वो integers ले रहा हूँ. Okay. अब आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. Okay. I take beta is equal to, so let us say 7.3. Okay. So somebody can tell me what is S beta? मैंने क्या कर रहा हूँ? मैं all integers कलेक्ट कर रहा हूँ. which integers कलेक्ट कर रहा हूँ? ये 7.3 में कम है और इक्वल भी है. आप बता सकते हैं ये एस बीटा क्या हो सकता है? सर 7. 7. ओके 7 ले सकता हूँ. 8 भी है. सर माइनस 10 भी है. minus infinity to 7. 7. So yeah, good. सर How you take? We take from like this side. यहाँ पे एंड हो गया. इस तरफ एंड हो गया. 7 के बाद में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 8 is not less than or equal to 7.3. Okay, good. So आपको समझ में आ गया. एक नंबर रियल नंबर ले रहा हूँ, उनके हिसाब से एक सेट बना रहा हूँ. ओके, गुड, नाइस, अंडरस्टूड, राइट. सो ओके, लेट मी चेक वन मोर टाइम अगेन. व्हाट इज S0? बीटा इक्वल टू 0 होते तो S बीटा बता सकते हैं? S0 बता सकते हैं? Yeah, no problem. No need to raise your hand. Tell us, one of you mute and tell yes. Unmute and tell. Minus infinity to can you 0. tell me? ये केवल सर माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक है? 0 भी इंक्लूडेड है इस पर. हाँ, 0. यस सर. क्योंकि लेस देन और इक्वल टू ले रहा हूँ, इस वजह से वहां तक भी ले सकता हूँ. 0 भी है इस पे. गुड, वेरी नाइस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो नाउ आई विल आस्क मोर क्वेश्चंस, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एस बीटा? इज इट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी? क्या लिखना है? हाँ, एम्प्टी लिखना है, नॉन एम्प्टी लिखना है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नॉन एम्प्टी. ओके, चेक करते हैं. ओके, यू आर टेलिंग दैट दिस इज नॉन एम्प्टी, बट ओके, लेट अस चेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Okay, before going to question number 3, maybe question number 3 may be easy for you. That's why I'm asking that. What we can say about S beta? कुछ और बता सकते हैं? Any number is subset of real numbers also. When somebody told that it is a subset of real numbers, that is also correct, because subset of integers, so it is subset of real numbers. But which numbers I'm collecting less than or equal to beta? So if you take any element in S beta, it is less than or equal to beta. ये यूज करके आप कुछ बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप या टेल somebody. Yeah, so those who are raising hand, one of you can. So beta is an upper bound of. Beta is an upper Yes, so bound. beta is an upper bound for S beta. So S beta is bounded above or not, right? Question number 3, ये मेरा question है. Is S beta is bounded above, but you are already given answer. Not only that, beta is an upper bound also. Wonderful. Is S beta is bounded above? Bounded above. Yes. Answer is yes. Yes, and the beta is an upper bound. वो भी बताया. Okay, good, nice. Actually, you people do not know what I'm going to ask, right? But even then you are telling. That means you are following. Good. Okay, now come back to here. How to prove that S beta is non-empty? Okay. So one of you told that it is a non-empty always. Yeah, 7.3 लेते तो non-empty है. So इनफैक्ट आप देख सकते हैं इनफाइनाइट सेट है. लग रहा है ना ऐसा इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन पहले नॉन एम्प्टी दिखाना है. आप कैसे दिखाएंगे? एनी आइडिया हाउ टू प्रूव एस बीटा इज नॉन एम्प्टी? सर कोई एलिमेंट लेंगे एस बीटा में से, नॉन एम्प्टी ऑलरेडी जैसे x बिलोंग्स टू एस बीटा. ऑलरेडी एस बीटा नॉन एम्प्टी दिखाना है. आप एक एलिमेंट लेते तो ऑलरेडी नॉन एम्प्टी है. क्या दिखाना है? सी आपने प्रूव करना है इट इज नॉन एम्प्टी. आप बता रहे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता तो ऑलरेडी नॉन एम्प्टी है.
दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना? आपको समझ में आ गया ज्योति? या 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 Yes, sir. या somebody else? Sunil sir, you can ask one of them. Asha? Yeah, Yes, Asha, sir. can you tell me how do I prove it is non-empty? Okay. Ashish? Okay. 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 Naresh? No problem. So they are facing some difficulty. No problem. I will do one thing. I will ask no question so that आप ये question आप बता सकते हो. But by the way, still anyone is there to answer first of all. If not, I will proceed. Right? Sir, is there anyone to answer? Yeah, please. Can you try, sir? Yes, Yes, sir. So since it is given Okay. that it is bounded above, so then there must be an element which is less than or equal to beta from that set. Then, sir, we can say do that not it is use non-empty. this without using it. Prove that's why I wrote in the question 3. That's the reason I wantedly wrote. But don't use this, okay? बिना use करके बता सकते हो. Forget about this one. Yeah. But okay, yeah. Then, sir, I need Yeah, to right. think on that. So, but I'm gonna ask one question to you. So आप ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा सा irrelevant है यहाँ. Okay, relevant है लेकिन इसके it is not related to this beta now. Okay, I'm asking one question. Okay, question number 4. Question is that A subset of beta B is given, and I given that it is non-empty also, non-empty given, and I told that B is bounded above. B is bounded above. Okay. Now can you tell me that what we can say about A? Is A also bounded above? Yes, sir. How to prove that? So for that, first of all, B is bounded above. उसका मतलब क्या है? B is bounded above मतलब definition क्या है? B is bounded above means it has an upper bound. There exists right? an Yeah. yes. So alpha is an upper bound for B. That means whatever element you take in B, that element is less than or equal to alpha. Okay. How do you show that A is also bounded above? yes, Rohit. Given any x belongs to A, x is less than equal to वो alpha. कैसे प्रूव करेंगे? वो अच्छा है, आपने ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो कैसे हुआ है? I know that if x is in B, then x is less than or equal to alpha. But you are telling x is in A, why x is less than or equal to alpha? Because A is the subset of B, yes. so all the elements of A Yeah, contains so in B. x is in A, so x is in B. But if x is in B, x is less than or equal to alpha. So yes, if A is bounded above, then B is also bounded above. Okay, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन. ओके, आप रेडी है? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, again I'm giving this. Okay, so this is subset. It is not equal to empty set. अभी मैं बता रहा हूँ A is not bounded above. A is not bounded above. Not bounded above. अभी B के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yeah, Ayush. Yeah, okay. No Sir, problem. B be not bound. Good. This is also not bounded above, right? Yeah, we just now we proved this is actually contrapositive only. If B is bounded above, then A is also bounded above. That gives a contradiction. So if this is not bounded above, then B is also not bounded above, right? Well, wonderful. It is clear. It's not bounded above, right? Now अभी हाँ आ जाएंगे. Now come back.
I want to show that S beta is non-empty. So generally, how do you proceed? One approach is what? Prove by contradiction. Contradiction क्या होता है इसका? Yeah, anyone can tell me? S beta not equal to empty. उनका negation क्या है? S beta is empty. S beta is empty. So S beta empty का मतलब क्या है? S beta कैसे डिफाइन किया है हम लोग? S beta है all integers which are less than or equal to beta. लेकिन ये empty है. उसका मतलब क्या है? We are collecting all those integers which are less than or equal to beta. लेकिन empty मतलब क्या है? S beta empty मतलब क्या है? हाँ, yes, yes sir. One of Yes. Preeti. Yes, Preeti. Yes, sir. S beta empty मतलब क्या है? इसमें कोई इंटीजर नहीं है. It means So that means if I take any integer, small z belongs to capital Z, क्या होता है? It is empty मतलब क्या है? एक एलिमेंट S beta में होते तो क्या हो रहे हैं? वो बेटा से कम हो रहे हैं. बेटा लेस देन इक्वल टू बेटा. Her integer is greater than Z is greater than beta, right? Yeah, thank you. Okay, you can use. So S beta equal to empty means so no, there is no integer here in S beta. उसका मतलब हर integer beta में ज्यादा है. So draw the diagram and see. When you are not understanding, so draw the diagram, right? What is that we are looking? We are taking some beta is here. We are collecting all the integers here, right? Now S beta is empty मतलब क्या है? All integers are here. All integers are here. So is there any problem with that? That we need to see now. Okay. Yeah. So इसका मतलब क्या है? What happens to this? Can you say something now? For every Z belongs to Z. Every Z belongs to Z. I'm telling that. What do you know about this minus Z and minus beta now? Yeah, Sahil. Now what happens to this? Sir, minus Z जो होगा वो minus Z is less than minus. Sir, Now can you tell me minus now beta. every integer is less than minus beta? What do you say about minus beta now? Sir, minus beta is No, positive. Don't worry about that. हर इंटीजर किसी भी सेट एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट ले लो जेड से वो माइनस बेटा से कम है. उससे आप क्या बता सकते हो? हर एलिमेंट Minus beta इज किसी भी एलिमेंट जेड से ये माइनस बेटा से छोटा है. 0. उसकी मतलब माइनस बेटा क्या हो सकता है जेड सेट को? ओके. माइनस बेटा Upper bound. इज upper bound for what? Upper bound. Yeah, upper bound. Wonderful. Thank you. And upper bound. No. Minus Z. Upper bound for Z only, right? Upper bound for Why minus Z के लिए? Z के लिए. By the way, what is minus Z? You are telling minus Z. So आपसे मैं बात कर रहा हूँ. What is minus Z? Is it equal to Z or not? Yeah. So there is no difference, right? Yes, sir, Z equal से है. हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो ऐसा होगा. सो माइनस जेड इज जेड ओनली. सो आपने अभी क्या प्रूव किया? सो जेड इज नाउ माइनस बेटा इज नॉट कौन फॉर जेड की मतलब है क्या है? जेड जेड के लिए
Z is जेड इज non नॉन empty. एम्प्टी, वहीं से नहीं आया है, अभी अभी नहीं आया है, केवल क्या आया अभी, माइनस बीटा इज एन अपर बाउंड फॉर जेड, माइनस बीटा बाउंडेड अबव। सो जेड हो गया बाउंडेड अबव, जेड हो गया बाउंडेड अबव बिकॉज एक अपर बाउंड मिल गया उनको, राइट। सो जेड इज बाउंडेड अबव। सो कोई प्रॉब्लम है जेड बाउंडेड अबव होते तो, ये प्रॉपर्टी 4 से कुछ बता सकते हैं आप लोग? If this is bounded above, this is also bounded above, right? Now Z is bounded above. Z is bounded above. ये क्या करेंगे? Z is bounded above. आपको कुछ सेट पता है? नॉन एम्प्टी वाला यहाँ Z में कंटेन है, कोई सेट पता है आपको अच्छे से सेट? वो Z में कंटेन है लेकिन नॉन एम्प्टी है। Very good. Yeah. So The natural number natural is number. subset. Now this is bounded above. Of course not. Yeah, it is bounded above. Then what happens? If this is bounded above, what happens to this? So bounded above. कुछ प्रॉब्लम है? नेचुरल नंबर हाँ, ये भी bounded above हो नेचुरल गया, नंबर का सेट भी लेकिन ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है किसी के? या AP1 से? सर आर्किमेडियन प्रॉपर्टी So AP1 बता रहे हैं नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड above, लेकिन ये बाउंडेड above होते तो ये भी बाउंडेड above है। तो अभी क्या हुआ है? So this one, I want you that before you go to your home, yeah, before you complete the meeting, you have to understand this today, every one of you, why S beta is non-empty. हम कैसे प्रूव करा? सपोज S is empty, empty मान लिया, empty मानते तो क्या है, कोई इंटीजर इस पे नहीं है। इंटीजर इस पे S बीटा में कब होता है? वो इंटीजर बीटा से कम होता तो और इक्वल होते तो, लेकिन कोई इंटीजर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो वो इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन बीटा। So every integer minus of every integer is less than minus beta. That means, but as we discussed, there is no difference between Z and minus Z. So सारी की सारी integers less than minus beta हो गया। Minus beta is an upper bound for Z. That is a contradiction for n is not bounded above. So Z is bounded above आ गया, लेकिन n is subset of Z, वो भी bounded above हो गया, वो contradiction है। ये contradiction किसके लिए आया है? S beta empty हमने लिया है, इसकी वजह से आ गया। That means our assumption SB equal to empty is wrong. Oh, yeah, it is very tough. Means we need to be focused. Then it is not tough. Otherwise, it is tough. So, how many of you understood? Can you raise your hand, please? If you understand, don't worry. So, how many of you understand at least 40%? Can you raise your hand? 40% समझ में आ गया पूरा? Okay, no problem. Sir, how many are there? Yes, sir. Again, more than 20. More than 20. Okay. Now lower your hand. How many of you are able to prove it now? Can you lower your hand and only raise those people? How many of you are able to prove now? कम से कम 10 है. Sir, how many are there, sir? Still they are clicking on raise an option, sir. So number is Okay. 7. Mm-hmm. So one of the person we can ask, sir. Let us see. Preeti? Yes, sir. Okay. Let us go through once, all of you. So I'll give some 10 seconds first. Please go through first. Then Preeti will answer. Take 10 seconds, sir. Go through the proof. Yeah, Preeti, can you tell us the proof? Yes, sir. सर हमें एस बीटा को नॉन एम्प्टी सेट दिखाने के लिए हम इसे मानेंगे कि भाई एस बीटा जो है वो एक एम्प्टी सेट है।
इसका मतलब है कि जो सारे इंटीजर्स हम ले रहे हैं Very वो good. बीटा से बड़े हैं। बढ़िया। Yeah. तो हम इसका माइनस जेड जो होगा वो माइनस बीटा से छोटा होगा अगर हम इसको नेगेटिव Very साइन से good. मल्टीप्लाई करते हैं Wonderful. तो Yes. इट मींस माइनस बीटा जो है वो अपर बाउंड है जेड के लिए। या वहां तक सर अब हम लेंगे एक सबसेट इंटीजर्स का। हमने लिया है नेचुरल नंबर का सेट लिया है। अगर z हमारा बाउंडेड अबव है मतलब इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर का Very सेट good, है very हमारा वो भी बाउंडेड अबव होगा। लेकिन ये जो है हमारा एक से वन का very कॉन्ट्रोडक्शन है। wonderful, Preeti. Correct. Very nicely told. Everything is good. Correct. Yeah, you can do that. So I think many of you understood. So hope you will revise this one more time. Yeah. See, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आज, केवल यही है मेरा। एक नंबर बीटा लिया है, रियल नंबर पे एस बीटा बनाया। एस बीटा इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। एस बीटा इज नॉन बी, अपन प्रूव किया अभी अभी। ये इस प्रूफ में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा it demands a little bit. Bounded up आसानी है। So already beta is an upper bound. Okay, यहाँ तक हो गया। अभी आप कोई ना कोई कुछ बता सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है, S beta is non-empty and S beta is bounded above. S beta is bounded above. ये तो है ना हमारे पास। इससे आप भी आप कुछ बता सकते हैं। Anyone want to comment? Sir, is anyone there? Yeah, raise your hand, please. नॉन एम्प्टी है, बॉन्डेड अबव है, ये यूज करके आप कुछ बता सकते हैं। आर्यन। Aryan, Yes, sir. So since we said that it is a subset of integers, so sir we can take an idea that S beta is also a subset of we real can numbers. think, yeah, it is a subset of real numbers. Yes. Then we can say that by LUV property it has Wonderful. By LUV it has LUV in R. Thanks. You can mute. Yeah, non-empty bonded above set in R has a least upper bound by LUV property. By LUV property, S beta has a least upper bound. Has a least upper bound. Good. So let's take let LUB, since it is unique, LUB is unique, so LUB of S beta, I'm calling it as alpha, right? Okay, अभी तक सारी ठीक है? Wonderful. Okay, now time is running up, so I'll ask questions on a little faster way. Huh? What can you say about alpha minus 1 now? Alpha is the least upper bound. So alpha minus 1 is not an SP. Upper bound for S beta. Okay. Okay. Not an upper bound मतलब क्या है? S beta. Okay. Good. So you told that alpha minus 1 is not upper bound. Upper bound. Sir, alpha minus 1 is less than alpha. No, that is anyhow there. Alpha minus 1 is always less than alpha. इसकी वजह से alpha minus 1 is not upper bound, right? Because alpha is the least upper bound. इसमें कोई छोटा लेगा तो upper bound नहीं, वही बताया था। लेकिन उनका मीनिंग क्या है? Alpha minus 1 is not upper bound for S beta. उसका मतलब क्या है? Sir, there exists an Z which is greater than alpha minus 1. That belongs to. I'm taking K. Okay. So there is a K. There is a K belongs to S beta. क्या बता रहे हैं? जो सब और एक बार S beta which is great. K is greater than alpha minus 1. Alpha minus strictly greater than alpha minus 1. हम एक बार अभी ड्रा करेंगे। हाँ, अभी एक बार ड्रा करके तो सारी की सारी हमको पता चलेगा। पहले हम बेटा से शुरू किया, राइट? पहले हम बेटा से शुरू किया, बेटा से के बाद मैंने एस बेटा डिफाइन किया, राइट? एस बेटा पूरा इस तरफ है, एस बेटा इस तरफ है, बेटा से छोटा है, वो पहले हो गया। सो देन वी प्रूव दैट इट इज नॉन एम्प्टी एंड इट इज बाउंडेड अबव। इसकी वजह से
इसको लीस्ट अपर बाउंड है. सो वो कहाँ पर होगा? सो दैट मे बी समवेयर हियर. सो से अल्फा, राइट? Maybe here or here, but around here. Okay. So her element here is less than or equal to alpha पे. Okay. Yeah, that we have. लेकिन अल्फा -1 कहाँ पर है? सो एक नंबर छोटा हो सकता है, राइट? अल्फा -1 समवेयर हियर. अल्फा -1, राइट? अल्फा -1 इज हियर. ओके, अभी आपने क्या बताया? अल्फा -1 अल्फा से छोटा है. अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड. Then you told that there is a k belong to S beta that is here. So this is my k. K belong to S beta, which is here. Okay. Are you clear with the diagram? Beta, alpha, alpha -1, k. K S beta में है. Okay, good, nice. Right. Now what is the next? Okay. So what we can say about now k+1. ये k+1 की and alpha के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yeah, that is easy. So k+1 is clearly greater than alpha, right? So because k is greater than alpha -1, so k+1 is greater than alpha. So k+1 कहाँ पर होगा, right? So k+1 I don't know, but it may be here or I don't know that. तो ये क्वेश्चन मार्क है. ओके, ये बेटा में कम है या नहीं वो देखना पड़ेगा. हमारा क्वेश्चन है k+1 की बेटा के बीच में क्या है ये. Yeah, that is what. So now we'll ask question. Now to answer this, is it possible that the beta is greater than k+1? Greater than or equal to k+1? ये हो सकता है क्या? ये होते तो क्या होगा? Yes, Ayush. Yeah, take time slowly. यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है. K is in S beta. K is in S beta. S beta is a subset of integers. से सारी की सारी integers है इस पे. So k+1 is also an integer, right? Yeah, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बेटा greater than or equal to k+1. So you know S beta की सेट के बारे में पता है, बेटा पता है, k+1 भी. Don't worry about that. What do you say from this? बेटा greater than or equal to k+1 से क्या बता सकते हैं? Beta is an upper bound of S That beta. we cannot say. Already beta is an upper bound of S beta. ये इससे क्या है? Already हमको पता है S beta is upper bound because of beta is an upper bound. लेकिन बेटा greater than or equal to k+1 से क्या बता सकते हैं? I know that k is an S beta. Now I got that beta. Assume that if beta is greater than or equal to k+1 हो तो क्या होगा? मैं simply क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. क्या? Yeah, Aryan. Yes, Okay. so, can repeat the question. K is an integer, k+1 is also an integer. ये तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है. Yes, sir. Yeah. Now suppose that beta is greater than or equal to k+1. इससे आप क्या बता सकते हो? पूछ. अभी k+1 is an integer. K+1 is not an Element element of of S S beta, beta. not an element of S beta. वो बता. S beta कैसे डिफाइन किया? S beta is all integers. S beta is set of integers less than or equal to beta. Is k+1 is integer? Yes. If k+1 is less than or equal to beta, क्या होगा? No, k+1 is least upper bound for S beta. What you can say about if it is an integer and it is less than or equal to beta, आप क्या बता सकते हो उसके बारे में? k+1 belongs to Who is S that? beta. Sahila. Who told that k+1 belongs to S beta? Yes, Yeah, Sahil. wonderful, correct. Yes, sir. Yeah, so that is definition. And Yes, if sir. it is less than or equal to beta plus k+1 belong to S beta. But what is the problem if k+1 belong to S beta? What is the
What can you give me one upper bound? What do you know about k plus 1 now? What happens to k plus 1? You know what is alpha? अल्फा कहाँ से आया था? हमारा हीरो कहाँ से आया था? यस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव की वजह से लीस्ट अपर बाउंड है, ये अल्फा है. लीस्ट अपर बाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल एन अपर बाउंड है. या नाउ k plus 1 इज इन s बीटा. कुछ बता सकते हैं? k plus 1 इज इन s बीटा. तो नो k plus 1 तो क्या होगा? अल्फा. यस. तो ये नॉट एन अपर बाउंड. k plus 1 बिलोंग टू s बीटा से. k plus 1 is less than or equal to alpha because alpha is the upper bound. But what is that we have already? K plus 1 is greater than alpha. ये contradiction है ना? greater than alpha. Contradiction किसके आ रहे हैं? ये मानते तो if you assume that this is beta is greater than k plus 1 ये आ रहे हैं. So k plus 1 क्या होगा? Now what is the relation between beta and k plus 1? Right? Tell me. Beta, right? Plus so beta is greater than less than k plus 1. Here, I want just to go up to this extent. So, मेरा beta है अभी. So k plus 1 is now here. Okay. So k plus 1 is somewhere here. Okay. Now, so k कहाँ पर है, k plus 1 कहाँ पर है, ये देखना है अभी. फाइनली एक मिनट. So आप देख सकते हैं डायग्राम पे यहाँ पर बेटा है. k कहाँ है? you already know that k plus 1 is here, right? k plus 1 is here. k plus 1 is greater than beta. k कहाँ पर है? Yeah, please tell. Now time is going, so you can tell. So k is an element in what? सर बीटा के लेफ्ट में. So बीटा के लेफ्ट में. तो k is an element in s बीटा, right? Because k कहाँ से आया था? Alpha minus 1 is not an upper bound. इसकी वजह से एक एलिमेंट आया k से, राइट? k में बिलोंग करेंगे. So यहाँ से k आया था. अल्फा माइनस 1 इज नॉट एन अपर बाउंड. इसकी वजह से s बीटा में एक एलिमेंट है, या अल्फा माइनस 1 पे ज्यादा है. देखिए k बीटा को इक्वल होता है, लेकिन सो इसकी वजह से k इज s बीटा बाय डेफिनेशन, राइट? k इज लेस देन इक्वल टू बीटा. s बीटा का डेफिनेशन है k इज लेस देन इक्वल टू बीटा. लेकिन अभी क्या आ गया? k प्लस 1. सो आपने क्या प्रूव किया? इफ यू टेक बीटा इज अ रियल नंबर, आपने क्या दिखाया? एक रियल नंबर लेते तो there exists an integer k such that integer. आपने क्या दिखाया? एक रियल नंबर लेते तो there is an integer. क्या दिखाया? now conclude करते हैं एक बार. आपने क्या देखा? if beta is a real number, then finally आपने क्या आ गया? there is a integer with a what property? Yeah, Aryan, go ahead. K is less than or equal to beta is less than k plus 1. Yes. Okay. So you take any real number, there is an integer such that k is less than or equal to beta is less than k plus 1. हम कैसे प्रूव किया है? बीटा लिया था. See, this is very nice proof, nice thing. पहले एक बीटा रियल नंबर लिया था, s बीटा कंस्ट्रक्ट किया था. s बीटा हमने प्रूव किया है नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव. So it has a least upper bound. वो अल्फा है. अल्फा माइनस 1 is not a least upper bound. एक k मिल गया. That is the hero of this, main hero of this film. In this film, k is the k कैसे आया था? k बीटा से आया था. ये कैसे आया था? That is important. So पहले बीटा लिया रियल नंबर, s बीटा कंस्ट्रक्ट किया. s बीटा बाउंडेड अबव. It has a least upper bound. Alpha least upper bound. Then alpha minus 1 is not a least upper bound. Then there is a k greater than alpha minus 1. But we proved that k plus 1 is greater than beta. That is the main cheese. Okay.
So please focus and concentrate and try to understand this. So I will close today, but before that, just I will make a statement properly. Okay. For every real number beta belongs to R, what we proved. Okay. So we proved there exists K belongs to Z, right? Such that K is less than or equal to beta is less than K plus 1. Okay, but I want to add something here. आपको समझ में आ रहा है मैंने gap क्यों दिया, right? So I want to say something. Suppose n is less than or equal to beta is less than n plus 1. M is less than or equal to beta less than m plus 1, where m comma n belong to Z integers, right? So right? Yeah. Any questions? I'm starting here, right? Yeah. Okay. So what is I want to show? Can somebody can predict? Yeah, tell. Time is not there. Yeah. Yes. Relation between m and n. That my m is equal to n. No, see, n equal to. So see, you take a real number beta. So we are saying that there is an integer. So यहाँ एक k होगा, यहाँ k plus 1 होगा, एक k plus 1 को बीच में होगा. ये बेटा इंटीजर होते तो इक्वल भी हो सकता है. That's why एक साइड हमने इक्वल टू भी लिया. बेटा इज इंटीजर, देन बेटा इक्वल टू k. लेकिन एक k plus 1 में छोटा है. So you take any real number that is in between k and k plus 1, right? That is this question. So I gave an exercise. Remember, मैंने एक exercise दिया है आपको. Okay, ये set ये वाला. So this is what I done today. Yeah. So आपको exercise दिया है लेकिन वो discuss कर रहा हूँ. Okay. Yeah. So you take any real number that is in between minus and n. एक but I'm proving little different. ये वाला उनको related है. Okay. But I'm proving much better. Okay. Yeah, you are correct. Whoever told now. So 2.5 will be 2.5. Can you tell me what is k? Yeah. If I take my beta is equal to 2.5, can you tell me k? What is integer? Beta. What is k and k plus 1? Can you tell me? 2, sir. 2. 2 and 3, right? So beta is between 2 and 3. Beta also lies in between other integers. Some 5 and 5 plus 6 also. No, right? That is what. So now I need to show that m equal to n, right? I want to show m equal to n. So we'll assume like this. Suppose that m is less than n, right? Okay, sorry, because of lack of time, I'm not asking questions. Suppose m is less than n. So can you say what it is about m plus 1 and n then? M plus 1 is greater than n. Why? So you take 2 and so for example, I take 2 and 5, right? 2 is less than 5. Chalega. 2 plus 1 is also less than 5. So what is that? No, sir. M plus 1 and n key. एक integer है, m is an integer, n is an integer. I know that. Yes. M plus 1 is less than equal to n. less than or equal to also, because 2 and 3 लेते तो equal भी हो सकता है. Yeah. So ये तो है हमारे पास. Okay. So just give 1 minute. So what is happened is that m plus 1 is less than or equal to n. अभी आप देख सकते हो. Right? So अभी क्या हो रहे हैं? I'll write by this letter. So m plus 1 is less than or equal to n, which is less than or equal to beta, which is less than m plus 1. Right? Beta यहाँ से लिया था. Right? So आपको समझ में आएगा बाद में. मैं ये बाद में लिख रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर है, लेकिन बाद में लिख रहा हूँ. So अभी क्या आ गया? यहाँ लेस देन है. m plus 1 is less than m plus 1. वो कॉन्ट्रडिक्शन है.
So m is less than is not correct. Similarly, you can show that n is less than m is also not correct. So n equal to m hona chahiye. That means that we proved that there is a unique integer such that which is lies having this property. So this is called greatest integer. Since it is unique, whenever it is unique, I can give name to it, right? ये beta आ गया, beta के लिए एक integer मिल गया, there is just unique integer k, right? Unique integer k such that product property k less than or equal to beta less than plus 1. ये तो unique हो गया, इसकी वजह से इनको मैं एक नाम दे रहा हूँ, ऐसा दिखा रहा हूँ. It is called greatest integer function. Greatest integer. हम नाम कब देंगे, ये यूनिक होते तो हम यूनिक प्रूव किया है, सो इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर. आप तो यूज कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन आज हमने प्रूव किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट होता है, ये यूनिक है. आर यू क्लियर? Actually, I want to show other results, nice results, but time is already up, so I cannot go further. Yeah, I'll stop here. So, any questions you want to ask me? So, how many of you cleared the proof of this result? See, मैं result पहले नहीं किया था, बाद में बेटा से शुरू किया, एस बेटा डिफाइन किया. सो ये नॉन एम्प्टी बाउंडेड वो दिखाया था, उसके बाद मैंने के लाया था. के कैसे लाया था? By least upper bound property alpha is there, alpha minus 1 is not an upper bound, वहां से के आ गया, वही है मेरा हीरो. Sorry, I am writing hero here, but so you understand later. ये हीरो कहाँ से आया था? ये हीरो least upper bound property से आया था. Okay, that is my needed. So हर बीटा के लिए एक के होगा. So that is having this. So finally I made a statement. For every beta, given any beta, there is a k which is like this. But later I proved it is unique. Okay. Yeah. So this is what we call greatest integer function. I'll stop here. Any questions you can ask me. I'm writing one more time. Email ID, you can write to me. Yeah. Any questions? Okay, then I'll stop here. Yes, Aryan. Yes, sir. So we can also prove that K is LUB for this set. Wonderful question. Yes. In fact, actually K is a least upper bound only. In fact, that alpha equal to K only. Because now I cannot get more than that, right? Very wonderful question आपने पूछा था, लेकिन मेरा पास टाइम नहीं था, otherwise I lost that question. Yeah, so I request you to discuss with other people if time permits, if they ask you. In fact, that K is the alpha actually. K equal to alpha hai. K is the least upper bound for the set SZ. So it is least upper bound and it belongs to the set. Then what is K? An element is least upper bound as well as it belongs to the set. That is upper bound and belong to the set. Then what is that element? That is called maximum. So here K is the maximum for S beta. That you know, right? 3.5 लेते तो आप क्या ले रहे हैं? कहाँ तक लिया था आपने? -infinity to 3 तक लिया था. So 3 becomes the upper bound. That is upper bound. That is the least upper bound, and that is a maximum, right? Yeah, you are correct, Aryan. Wonderful. Yes. Any other questions? Okay, लेकिन ये यूज करके आप rationals are dense and all can be proved easily. Maybe in the next class, some other professor will tell you. That is now easy, but actually if I have 10 more minutes, I can complete that. Okay, but anyhow, I'll stop here.